हो गया ऑन हो गया है। अच्छा वो स्क्रीन ऑन होगा। इसको आप रखिए, किसी का फ़ोन आएगा फ़ोन काट दीजिए। Good morning all of you. ये आपकी जिम्मेदारी है, घंटा यहाँ पे स्क्रीन I रिकॉर्डिंग hope हो we are रहा ready है for today's training और रख program. दीजिए। ठीक है, But only 5 participants have joined till now, so I think others will join. If with your permission, can we start the today's session? Okay. Today's session is a very interesting session because it is the session on happiness. And I think all of us want to be happy. If you understand education properly, then I'm sure you will be knowing, my dear teachers, that what is the purpose of education? हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम IIT के पीछे क्यों भागते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, IAS ऑफिसर एक्सेट्रा क्यों बनना चाहते हैं? रीजन सिर्फ की है बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं। तो जब हम हैप्पी होना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस के लिए हमें कुछ एफर्ट भी करना होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप बस चाहें और आप हैप्पी हो गए। It doesn't happen like this. For happiness also there are certain tricks, there are certain techniques, there are certain things that you have to follow in your life if you want to be happy. So today we are going to discuss this happy topic, and I hope all of you wear a smile on your face when you're doing this training. So today we are going to understand that how to make our classrooms happy. जहाँ 40 बच्चे हों, वहाँ अगर हैप्पीनेस नहीं हो, किलकारी नहीं हो, खुशियां नहीं हो, मुस्कुराहट नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता वो क्लासरूम कहलाने लायक जगह भी। क्लासरूम का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता। क्लासरूम का मतलब ये नहीं होता कि सारे बच्चे एकदम सीधे बैठे रहे टीचर के डर से। वो क्लास है ही नहीं, ये डेफिनेशन ही गलत है। What is a classroom? A classroom is a place where there are smiles, where there is knowledge, where there is experiment, where there are activities, where there is engagement, and at the end, what is there? There is happiness. So, let me allow me to share my screen to discuss today's beautiful topic, my personal favorite, that is happy teachers create happy spaces. क्योंकि आप भी मानते होंगे कि अगर टीचर हैप्पी नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है क्लासरूम एनवायरनमेंट को हैप्पी बनाना। अगर आपकी आज सुबह सुबह घर में अपने हस्बैंड से या अपने मेड से या अपने बच्चों से या अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई है और अगर आप उसी मोड में स्कूल में एंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप स्कूल में भी किसी को हैप्पीनेस नहीं दे पाइएगा। आप स्कूल में भी किसी से अपनी लड़ाई हो जाएगी, किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अनहैप्पीनेस को अपने साथ कैरी करके लाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि वी हैव टू बी हैप्पी। हमें खुद खुश होना है दूसरों को खुश करने के लिए। और यहाँ दूसरा कौन है? मेरे बच्चे। बिकॉज वी आर टॉकिंग, वी आर डूइंग दिस वर्कशॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर चिल्ड्रन। सो हमारे लिए हम नंबर 1 है और नंबर 2 पे हमारे कौन है? हमारे बच्चे हैं। हाउ डू वी मेक आवर चिल्ड्रन हैप्पी इफ वी आर नॉट हैप्पी? तो सबसे पहले आपको खुद मुस्कुराते रहना होगा, बिल्कुल स्माइली बॉल की तरह जो मैंने यहाँ पे डाला है, एंड मेक योर चिल्ड्रन हैप्पी। नाउ let me put it into slideshow view so that it is easy for you all to see. Now, what are the objectives of today? You have to understand what is happiness and how can you achieve it, and how teachers can create a happy classroom that fosters learning and creative thinking. बहुत सिंपल सा लॉजिक है माय डियर टीचर्स। अगर आपके बच्चे खुश नहीं हैं, अगर आपके बच्चों पे कोई मानसिक दबाव है, कोई शारीरिक दबाव है, कोई पेन है, कोई एगनी है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई फियर है, कोई डर है, कोई गिल्ट है, कोई स्ट्रेस है, तो वो बच्चा कभी भी प्रॉपर्ली लर्न नहीं करेगा। और अगर आपके डर से 2-4 चीजें रट भी लेता है तो वो अपना, उसके दिमाग का शटर बंद हो जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकेगा, वो क्रिएट नहीं कर सकेगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी वांट। अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को याद करेंगे तो सबसे उछले पायदान पर व्हाट इज देयर? क्रिएशन। यानी हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं, उसकी मदद से मेरा बच्चा कुछ क्रिएट कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो क्रिएशन अगर आप चाहते हैं तो बच्चों को हैप्पी रखिए, खुश रखिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसे होगा? क्लास में बेसिकली तीन तरीके का एनवायरनमेंट होता है, इसको काइंडली समझिए। सबसे पहला होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है इमोशनल एनवायरनमेंट, और तीसरा होता है रोल ऑफ सेल्फ एस्टीम इन द क्लासरूम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट की। हाउ कैन वी मेक द फिजिकल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम गुड? सो फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स क्लासरूम डेकोरेशन, क्लासरूम सीटिंग, क्लासरूम की व्यवस्था, क्लासरूम में कंफर्ट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स लाइक टू सी देयर ओन वर्क डिस्प्लेड इवन इन हाई स्कूल्स, इवन इन क्लास 12। अगर आप बच्चों के वर्क को डिस्प्ले कर देंगे, अगर आप बच्चों को बताएंगे तुम्हारा क्लास है, तुम इसे अपने तरीके से सजा कर रखो, तो बच्चे खुश होंगे, वहां आना उनको अच्छा लगेगा। Classmate posters help students develop a sense of belonging, and of course brands. At least आपके क्लास में एक या दो ब्रांड्स होने चाहिए। इसका रिलेशन एक और है। अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को आप समझते हैं, तो आप समझेंगे कि कुछ नेचुरलिस्ट बच्चे भी होते हैं जिनको पेड़ पौधे, मछलियां, पानी, जानवर से बहुत प्यार होता है। तो वो चीजें आपके, वो एलिमेंट्स अगर आपके क्लासरूम में होंगे, तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जैसे आप देखेंगे, आपका मूड कितना भी खराब रहे, जैसे ही आप नर्सरी क्लासेस में जाते हैं, आप देखते हैं कितना सुंदर एनवायरनमेंट है, कितना कलरफुल क्लास है, कितनी ड्राइंग की गई है, बोर्ड डेकोरेटेड है, यानी ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सीनियर क्लास में जाते हैं, चीजें कम होती जाती हैं, जो गलत है। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर क्लास 12 तक की क्लासेस कलरफुल हो, सुंदर हो, बच्चों की आर्ट वर्क से भरी हुई हो, बच्चों के प्रोजेक्ट से भरी हुई, बच्चों के काम से भरा हुआ हो, बच्चे एंजॉय करेंगे। दूसरा कंपोनेंट है फॉर फिजिकल environment. The second component is student placement. Now what is the meaning of student placement? Please see where your children are sitting, who is sitting where. Suppose there's a child who gets distracted very soon, don't make that child sit near the door or the window. Keep him in the center of the classroom. So you have to understand that who should sit in the front, who should sit in the back, how many times rotation should take place, who should occupy which seat. Every child is comfortable or not. If it is an inclusive classroom, then the children there who are specially able, they are comfortable in your class or not. Then you can develop corner system in the school. Now what is a corner system? Corner system means फिर हम multiple intelligence पे आ जाते हैं. For example, somebody is a naturalist child, somebody is a musical child, somebody is a read write child, creative child. उन बच्चों के लिए आप कुछ चीजें क्लासरूम में रखो। जैसे मान लीजिए एज अ टीचर आपने कुछ काम दिया, आई फिनिश माई वर्क, मैं कहाँ जाऊँ? मैं चली जाऊँ अपने कॉर्नर पे, जो मेरा फेवरेट कॉर्नर हो, और वहां जाकर मैं थोड़ा समय स्पेंड करूं। इससे क्या होगा? माय माइंड विल बिकम रिफ्रेश्ड, आई विल गेन एनर्जी, एंड आई विल बी एबल टू डू गुड वर्क इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरिंग द इमोशनल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल एनवायरनमेंट? आपका फिजिकल एनवायरनमेंट इज क्लियर, आई एम श्योर। प्लेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन, पुटिंग चिल्ड्रंस वर्क एंड डेवलपिंग कॉर्नर सिस्टम, जहां बच्चे अपने फ्री टाइम में जाकर अपने आप को एंगेज कर सके, बिकॉज एंगेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। If you can keep your children engaged, then your children will not create any kind of nuisance in the class. They will not shout, they will not be indisciplined, they will not loiter around here and there. But if your children are not engaged, then only the issues of indiscipline come into front. Now, next is emotional environment. आपका क्लास बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा से डेकोरेटेड है, बच्चे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अच्छे से, बच्चों को खुशी होती है। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में आते हैं, वो फिर अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनके इमोशंस का ध्यान नहीं रखा जाता है। द टीचर इज ऑलवेज यूजिंग लैंग्वेज जिससे बच्चा डिमीन फील करता है, बच्चा डिमोटिवेटेड फील करता है। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू वैल्यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, so that every child feels special. For example, I'm the principal. Why should I always think that? The teacher will wish me, the staff will wish me? It can be the ulta also. I can also wish, so that every teacher, every staff, every maid, every sweeper in my school feels important. मैम ने मुझे विश किया। सिमिलरली आपका काम है कि हर बच्चे को फील कराएं कि वो स्पेशल है, वो इम्पोर्टेंट है। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में द बॉन्डिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, so that there is emotional attachment. Next, how to make this bond strong? मैं कुछ strategies बता देती हूँ आपको। आपको जो अच्छा लगे आप उसको pick up कर लीजिए। Greet students personally. Hello Alicia, how are you? How was your holy break? Are you enjoying? Okay.
What did your mom cook for Holi? This is personal. Personal greetings. Not only saying good morning and good afternoon. Talk to children. They want to share so many things with you, but they're afraid. They don't have time. They're not free. They're not able to do that. So please greet students personally. Next, make frequent eye contact. Many times I have personally also faced this when I was in class 9 and 10, that some of my teachers used to teach most kids who used to get 100 out of 100 and 90 out of 100. They never taught others. So you have to understand that whatever you are teaching in the class, you are teaching for everybody. You are a teacher of all students. So you need to understand this very, very well. Just a minute. Okay. Next, negotiate rules and routine in the class. Don't be a dictator. Don't give your rules and your regulations. You have to negotiate. कैसे करते हैं, फिर वो कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, so the children feel कि मैम और सर मेरी बात भी सुनते हैं. They listen to us. They give importance to us. Acknowledge positive behavior. I'm sure all of you are acknowledging negative behavior. Why are you talking? Keep quiet. Don't do this. Don't do that. But what about the positive things? Even if the child is sitting straight for 10 minutes, it's really a tough job for a child. You sit on the chair for 10 minutes, you'll not be able to sit straight. Acknowledge it. Use positive language. Instead of saying don't talk, you can say, I'll be very happy if you keep quiet for some time. So instead of saying don't, no, you can put it in the positive way. Stop saying no. Interact with students outside the classroom too. Yes, that is how children also interact with us outside the school. Otherwise, you'll see when children see us outside the school, they don't know us. They don't even wish. They don't. They just try to run away from us. Why? Because we never interact with them outside the classroom. So they feel इस teacher का काम सिर्फ क्लास ही तक है. क्लास के बाद इनका कोई रोल नहीं. Minimize embarrassment. We all have dark sides. I am fat, I am dark, I don't have good hair, I don't have good teeth. Everybody has dark sides. लेकिन अगर आप मुझे मेरी कमजोरियां ही हमेशा याद दिलाओगे तो मेरी अच्छाइयों को कौन याद दिलाए? So, it's a teacher's responsibility to minimize embarrassment and don't be a strict teacher always. Wear a smile on your face. Jokes. Make the pressure of the children light. Especially in the senior classes, they are very much pressure based. Okay, so you have to use humor also. And the third component of a happy class is self esteem. Please remember, what is self esteem? What is self esteem? Self esteem means my worth, मेरी कीमत. जिस दिन आपके बच्चे को ये महसूस होगा कि मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, मेरी कीमत तो 10 रुपए भी नहीं है मार्केट में, मेरी जीरो कीमत है इस क्लासरूम में, मैं रहूं ना रहूं क्या फर्क पड़ता है. That is the time when the child loses everything. And let me tell you, my dear teachers, I may sound a little harsh, but I still want to mention here that if the child loses self esteem, the child is going to lose everything in life, even life. People who have very poor self esteem, they are the people who are more into depression and frustration and finally end suicide. God forbid this happens to any child anywhere. So you are a teacher, it is your role, it is your responsibility to make sure that every child has a worth in your class. Every child feels valuable in the class. Every child feels, yes, I also do contribute. Even if I get poor grades in academics, I do contribute by singing, by dancing, in debates, in public speaking, in writing, in discipline, in uniform. So every child has a value. जब आप अपने स्कूल में अवार्ड सेरेमनी करते हैं तो क्या आप सिर्फ एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी करते हैं? क्या आप बेस्ट यूनिफॉर्म को प्राइज नहीं देते, बेस्ट अटेंडेंस को प्राइज नहीं देते, या बेस्ट डिसिप्लिन बच्चे को नहीं देते, बेस्ट डांसर को नहीं देते? अगर आप नहीं देते हैं तो अपने अवार्ड सिस्टम को रीमॉडल करिए. Because every person has some worth, and it is the teacher's duty, it's a teacher's responsibility to find out that word and understand. Now, self-esteem leads to achievement. Teachers play a major role in enhancing the self-esteem of their students. Please understand this. Now, what should you do as a teacher to bring about self-esteem in your students?
फर्स्ट थिंग इज गिव वैल्यू टू सेल्फ एस्टीम। आपको समझना होगा एक बच्चे की बर्थ होती है। मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। एक साल का बच्चा, आप पब्लिकली अगर उसकी पैंट उतार देते हैं, लड़का हो या लड़की, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? Why the child starts crying? Because it affects the child's self esteem. उसको बुरा लगता है। तो जब आप एक साल के बच्चे के पास सेल्फ एस्टीम है, तो आपको क्या लगता है आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी नहीं है? लेकिन हम टीचर्स बहुत समय ये समझते हैं कि ये तो बच्चे हैं, उनका क्या सेल्फ एस्टीम। सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस that children also have self esteem and it's equally valuable as your self esteem. Motivate students and give them positive strokes. Focus on techniques that will result in increased self esteem. Do not label students. अरे ये तो बुद्धू बच्चा है, इसको तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग में गोबर है, अरे ये तो आइंस्टाइन है। लेकिन आप आइंस्टाइन उसको नेगेटिवली कह रहे हैं। Don't shield students from feelings of sadness, frustration, anxiety when they lose, fail and make mistakes. Yes, very important. मैंने भी बचपन में से सुना है और आपने भी सुना होगा, एक बहुत मशहूर कहावत है, मर्द को दर्द नहीं होता। रबिश, utter rubbish. This is one of the reasons perhaps that Indian men have are more of diabetic, they have hypertension, they have so many diseases, much more than females. The reason is, from childhood we are listening to this, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, and they just suppress their feelings. They don't bring it out. They will cry in public, they will not show their frustration, they will not show their sadness, they will not show their anxiety. उनको भी डर लगता है, they fear to lose. They are also afraid. लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ भी होता, मर्द को आगे कर दो, उनको डर नहीं लगता, उनको दुख नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होती, उनको परेशानी नहीं होती। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। Similarly, please float this in your classroom that it's okay. When you're feeling sad, you may cry. When you're feeling happy, you can laugh. When you're afraid, come and share with somebody that I'm afraid today, I'm anxious today, I'm afraid, I'm fearful. There we have good days, we have bad days. It's for everybody. When teachers, जब बच्चे अपने good and bad days को समझना सीखेंगे, तो वो आपके good and bad days को भी समझेंगे। मैं कितना भी आपको सेशन ले लूं कि हैप्पी क्लासेस हैप्पी क्लासेस हैप्पी क्लासेस, लेकिन आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दिन होगा जब आप वाकई हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ड्यूटी बनानी है, क्लासेस लेनी है। आपके बच्चे उस दिन समझेंगे that today is my teacher's bad day, unhappy day, and they will not mind even if you are a little different of that day. लेकिन आपने तो बच्चे को ये सिखाया ही नहीं कभी कि गुड डेज भी होते हैं, बैड डेज भी होते हैं, हाई डेज भी होते हैं, लो डेज भी होते हैं। आपने नहीं सिखाया, क्योंकि आप उनको हमेशा करते रहते हो, you cannot do this, you cannot do that, you cannot shout, you cannot yell, you cannot laugh, you cannot dance, you cannot show your anxiety, you have to do it, you are a fighter. तो बच्चा भी एक फॉल्स दुनिया में हमेशा है और वो एक्सपेक्ट करता है आप भी वैसे ही रहो। बट द रियलिटी इज डिफरेंट, और वो रियलिटी हमारे बच्चों के सामने आना चाहिए। ओके, उनको समझना चाहिए। नेक्स्ट, pathways to happiness. ये तो क्लासरूम एनवायरनमेंट हुआ। Now how to be happy from within? अगर हम क्लास में भी नहीं हैं, हम घर पे बैठे हैं, I can be sad, I can be blue. How to be happy? Happiness comes when you practice gratitude, forgiveness, optimism, empathy, and respect diversity. Please remember this. Gratitude means please say thank you. Express thank you. Feel thank you. Just by saying everything does nothing. Even if somebody has done a very, very small thing for you, you have to be thankful. Don't be ungrateful in life. Every day, teach your children to get up and say thank you, sun, for bringing light. Thank you, God, for giving this beautiful another day. Thank you, plants, for those lovely blooms which are making me so happy. Children, today have forgotten to say thank you. I'm sorry to say this, my dear teachers, but it is a fact. हमारे बच्चे अगर आपसे चॉकलेट भी मांगते हैं, तो उनके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन लेवल होती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कैडबरी सिल्क ही देंगे, या बहुत तरीके की चॉकलेट्स आगे ना वही देंगे। लेकिन अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल से थोड़ा कम का चॉकलेट ले जाओगे ना,
Maybe they'll not smile and they will not even say thank you to you. Your expectations, when they don't match, you forget everything in life. So please teach children the art of gratitude. They can even write a gratitude journal every day. Just thank you. Whom do they want to thank? There are so many people in this world whom we cannot say thank you personally. But at least if we say thank you from our heart, my soul and my heart says thank you. Researchers have proven this, that thank you reaches, the feeling reaches to the person about whom you're thinking. So if these children learn this at a very tender age, I'm sure उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा. Teach them to forgive and let go. You cannot keep so many things in your heart. Heart is how small? उनको समझाइए एक मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट है. इसमें कितने गले शिकवे लड़ाई झगड़ा रखोगे? Open it. जाने दो. Let it go away. Be happy. Optimism. Always see towards the brighter side. आप देखते होंगे हमारे देश, हमारे राज्य में स्पेशली उगते सूरज की पूजा तो होती है, साथ ही साथ डूबते सूरज की पूजा होती है. क्यों होती है? क्योंकि डूबना हमें ये बताता है कि हमें फिर से उगना है कल. So when there is a low tide in your life, you should be happy thinking that the high tide will also come. Empathy. Think from the other person's point of view. And respect diversity. Everybody is different. आपके क्लास में हो सकता है कैसा बच्चा जिसको कम सुनाई देता हो, जिसको कम चलने की शक्ति हो, जिसके पास कम बोलने की शक्ति हो, but they are also to be respected. Because they are different, we don't have to be unruly and not good to them. Please remember this. Next pathway to happiness is please maintain a balance. Because I told you in the beginning, you have to be happy if you want to make your children happy. So please strike a balance between homework and school. Like, my personal, I'll tell you, just my personal tip. You may like it, you may not like it, but I follow it. Once I'm at home, I forget about my school. I have made a WhatsApp group. Suppose important messages keep on coming, important mails keep on coming, but I don't want to answer them. ऐसा कोई emergency mail नहीं होता कि आप अगर एक रात answer नहीं करें तो बहुत कुछ हो जाएगा. Until and unless it is really that emergency. What I do is I just shift it to my WhatsApp group, which I've made, जिसमें सिर्फ मैं हूँ. एक ग्रुप है जिसमें मैं थी और मैंने एक आदमी को डाल रखा था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया तुरंत, क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप में अपने लिए बनाना था. मैं उसमें डाल के शिफ्ट करके रख देती हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने एक समय बनाया है कि कल जब मैं स्कूल जाऊंगी उस समय मैं इसको खोलूंगी और जो भी मेरा काम है उसको करूंगी. यानी 24 आवर्स में मैं एक टाइम डिवाइड कर दिया, ये मेरे काम के लिए, ये घर के लिए, एंड आई डोंट मिक्स अप. बिकॉज कोविड के बाद से रियलाइज बहुत सारे चीजें ऑनलाइन हो गई है. ऑनलाइन सेशंस हो गई जैसे मैं भी ले रही हूँ. ऑल द टाइम पीपल वांट दैट यू शुड बी अवेलेबल फॉर देम, बट आई एम नॉट अवेलेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. But I will be available again and I'll respond at that point of time. I'm not ignoring the work, but I'm just asking for some time to respond. और मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप अगर 8-10 घंटे रिस्पॉन्ड नहीं करो तो कुछ हो जाएगा. ट्रस्ट मी, कल हम इस दुनिया में रहे ना रहे, दुनिया फिर भी चलेगी. सो आप हर चीज को प्रायोरिटी नहीं दीजिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स नीड प्रायोरिटी एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर आप ये समझेंगे तभी यू कैन बैलेंस योर वर्क एंड योर होम. टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. इसी में प्रायोरिटाइजेशन कम्स. व्हाट थिंग्स आई वांट टू डू जस्ट नाउ, व्हाट थिंग्स आई कैन डू लेटर ऑन. Rationalize your thoughts, please. You are not Superman, you're not Spider-Man, you're not He-Man. You cannot do everything. अगर मैं शाम के 7 बजे घर वापस जाती हूँ, उसके बाद में जाके आज बिरयानी नहीं बना सकती, नहीं पॉसिबल है, मैं बिरयानी छुट्टी के दिन ही बनाऊंगी. ये रैशनलाइज थॉट्स. अगर आप ये सोचते हैं यू कैन डू एवरीथिंग, तो शायद आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. Joy of giving and helping. Please give something to someone who needs it. Please help people without any expectations. You should help and give. This makes you happy. Take care of your physical health.
अगर एक दिन जरा सा बस सर दर्द हो, दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी आपको नहीं अच्छी लगेगी. So you must take care of yourself. Don't say I don't have time to go to the doctor. I don't have time. I don't have this. I don't have that. Please. Spiritualism. I'm not saying be religious. This has nothing to do with religion. Spiritual means I will never speak ill about others. I will talk to myself once in a day. I will do some good things. This is spiritualism. Meditation. And सबसे important है these days, in CVs also we don't see this hobby. Hobby is a dying art, or it's a dead art, I should say. Nobody has time for hobby. That time we have given to WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., 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 which is of no use. Instead, if you have a hobby, please pursue it. चाहे वो painting हो, drama हो, dance हो, कुछ भी हो. Okay, so these are some tips which can make you feel happy. Now, if you are happy, अगर इन tips को use करके आप happy हो गए हैं, so how do you integrate that happiness into your classrooms? The first thing, go to your class and write any one positive thought, any one of these, or you can frame your own also. I am enough. I believe in myself and my abilities. I can control my own happiness. Today I am a leader. Today is going to be an awesome day. I can get through this. My positive self-talk. So please remember this, teachers, that start the day with positivity. Don't start shouting at people and say, hey, keep quiet, don't do this, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम लेट क्यों आए, तुम्हें ऐसा होगा, तुम्हें वैसा होगा. Start your day with a lot of positivity. You can always check children. You can tell them this is wrong behavior, this is right behavior, but that too, you can tell positively. Don't be a negative person, be a positive person. Some ways to create a happy classroom. So what is a classroom? Is it only a room with some benches and tables and a board? No, my dear teachers. A classroom is a space where happiness takes precedence, happiness takes a front seat, where children are always met with a smile and with positivity. It's a space where their well-being is as important as their academic achievements. So how do we create one? See, the definition of classroom is absolutely different. It is a place where happiness is first, where children are met with smile, positivity, their physical health, well-being, their mental well-being is well taken care of. Yesterday we were discussing a topic on mental well-being. I hope you remember we were discussing violence and injuries. So many examples I gave you, so many case studies we discussed yesterday. So my dear teachers, you should understand that not only physical well-being, even mental well-being is very important. आपका बच्चा स्ट्रेस में है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, गिल्ट में है, वो कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता. So academic actually comes next in the line. Even if you read the NCF, National Curriculum Framework for the Foundation Stage, you will find that there is one chapter on the Panchakoshas. हम ये समझते हैं एज अ टीचर कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चे को अच्छा नंबर आना चाहिए, मैथ्स में अच्छा हो, साइंस में अच्छा हो, इंग्लिश में अच्छा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Panchakosh clearly defines that the very first thing that you should take care of a child is his physical requirements. उसे चोट तो नहीं लगी, कहीं से खून तो नहीं आ रहा है, कहीं दर्द तो नहीं है, उसने खाना खाए कि नहीं, अन्नमया कोशम. Food is our first requirement. If the child is not eating anything and coming to school, your lunch break is after 3 hours, the child will never focus on what you're teaching in the class. So first is annamaya kosham. If anna is good in your stomach, then next comes the pranamaya kosham. वो अन्न अंदर जाता है, start smiling, होता है या नहीं? अच्छा खाना गया, and we start smiling. We are happy. So once the child is happy and energetic and positive after eating good food, then third comes cognitive development. Cognitive development means English, Hindi, math, science, dimag. Cognition means dimag, your brain. After English, Hindi, math, science, with knowledge and with wisdom, what comes is the final kosha, which says Anandamaya kosha. As I told you in the beginning also, that what is the purpose of education? The purpose of education is to be happy. So please remember, the first thing is not English, Hindi, math, science. The first thing is happiness. First. And the last is happiness. How can we be happy? We have to be physically,
good in well-being state. We have to be mentally in well-being state. We have to have good food within. We have to be surrounded with good thoughts, good environment. अगर आप बच्चे को कचरे के ढेर में बैठा दें, बहुत अच्छा लेक्चर दें, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा अच्छा करेगा. That is why we discuss about the physical ambience of the classroom. You understand? Okay. So this is the new definition of classroom. Now, what all can you do in your class to support your children? Provide them support. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरा टीचर मुझे सपोर्ट करेगा. जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, then also my teacher will support me. मेरा टीचर मेरे बगल में होगा, मेरा टीचर मुझे सही रास्ता दिखाएगा. Even if मैंने कुछ गलत किया है, प्लीज इसको दूसरे टर्म से मत लीजिए. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि even if I've done something wrong and I go and confess in front of my teacher will help me. My teacher will not say that whatever you've done is correct. Of course, don't do that. But my teacher will support and help me to come out of that awkward situation in life. गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उस awkward situation से, उस problem से बाहर निकालने में मेरा टीचर मुझे support करेगा, मुझे cooperate करेगा. This feeling your student should have. Only then you are a successful teacher. Their achievements and their successes. आप बच्चे के birthday को क्लास में celebrate करते हैं. आप बच्चे के पापा के बर्थडे को करते हैं. आपके बच्चे के पापा का प्रमोशन हुआ, क्या आप उसको सेलिब्रेट करते हो? आपके बच्चे के घर में भाई आया, बहन आया, क्या आप उसको सेलिब्रेट करते हो? How the child will develop a bond. ये क्लास के अंदर की बात है, इससे प्रिंसिपल मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं. ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. Maybe one sticker, one smiley is enough. One note in the diary. Congratulations, parents of Advita, on becoming mom and dad the second time. क्या लिखा? आपका 30 seconds भी नहीं जा रहा है, but you've created a ripple effect of happiness which will get transferred from one to other. आपने connection बनाया बच्चे के साथ घर तक का. What you have created you don't know. So you have to be a part of their life. You have to be part of their celebrations. You have to be part of their achievements and success, and you have to be part of their failure also. If something wrong happens, you can always send a small note again in the diary. So please remember, rewards, recognitions, they go a long way. Or until and unless you celebrate mistakes of the child will never grow. वो हमेशा यही सीखेगा बचपन से कि मुझे गलती हुई है तो उसको छुपा दो ताकि किसी को पता नहीं चले. क्यों नहीं पता चले? क्योंकि अगर गलती के बारे में पता चल जाएगा तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी. लेकिन अगर बच्चे को ये समझ में आए कि नहीं, गलती अगर मैं मैम को बताऊं या सर को बताऊं, वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, वो मुझे ये समझाएंगे कि ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, इससे ऐसे निकल जाओ और दोबारा ये गलती मत करो. Then the child will come up with mistakes also. क्यों बच्चे छुपा देते हैं? कोई स्कूल का शीशा टूट गया, पूरे क्लास को पता है किसने तोड़ा, लेकिन कोई नहीं पता. बच्चे अपने नंबर्स को चेंज कर लेते हैं. उसे पता उसने नंबर चेंज करे, लेकिन बताएगा नहीं, कन्फेस नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसे बचपन से ये सिखाया गया कि गलती करो मार खाओ, गलती करो डांट खाओ. लेकिन गलतियां भी सेलिब्रेट हो सकती हैं. This nobody has taught. Why we celebrate mistakes? So that we don't repeat the same mistake again. चलो एक गलती तो दोबारा नहीं दोहराएंगे लाइफ में. Let's celebrate that. So your attitude, your thought process, your mindset needs to be changed, my dear teachers. The third thing is teach the child self-confidence. Most important thing. I can do anything and everything. That एक से एक स्किल्ड लोग हैं. आप कहते हैं मिताली मुखर्जी अच्छा बोलती है, अच्छा सेशन लेती है, लेकिन आपको पता है मिताली मुखर्जी से 100 times better resource persons हैं. ऐसा कुछ नहीं है. But what makes Mitali Mukherjee different from others is perhaps the self-confidence. आप मुझे कोई भी चीज करने के लिए दो, मैं यही सोचती हूँ मैं कर लूँ. I'll try. मैं जरूर कर सकती हूँ. अगर मैं मेहनत करूँ मुझसे हो जाएगा. I never say I will not be able to do it. This is what makes me different from others. So please teachers, बचपन से आप कुछ मत दो बच्चे को, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दीजिए, कुछ स्किल्स दे दीजिए. आपको फिर उसके बाद चैप्टर्स पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The child will do it himself or herself. But nobody will be able to imbibe self-confidence and skill in the child except for the teacher. So your role is that. Okay. Building positive relationships. You know, it's very easy to break anything. Breaking is easiest in the world. But building is the most difficult. So please help children build positive relationships. How do we build positive relationships? By minimizing complaints. By letting the person be free. By
giving comfort and security to the person with whom I want to build up relationships. Maybe you are building up a relationship with your child. So you have to widen your circle. आप तभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, अच्छे रिलेशनशिप में रहोगे जब वो आपके हिसाब से सब काम करेंगे। व्हाट अबाउट अगर वो आपके हिसाब से नहीं करें? आपने बच्चे को ए लिखने के लिए कहा, वो बी लिख दे। आपने बच्चे को कहा घर जाकर पढ़ना, वो नहीं पढ़े, तो क्या आपका बच्चे का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा? नो, you have to strengthen it, you have to harness it, you have to develop it with so much of consistent effort. रोज मेहनत करना है, रोज मेहनत करना है, रोज मेहनत करना है, कंट्रीब्यूट करो। चाहे उधर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, फिर भी आप कंट्रीब्यूट करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन आप देखोगे तिजोरी भर जाएगी और आप फिर याद ही नहीं रख पाओगे भैया किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। सो प्लीज डोंट जज चिल्ड्रन। अरे वो तो बहुत बदमाश बच्चा है, हम स्टाफ रूम में भी ऐसे गॉसिप करते हैं। अरे आज क्लास 8 में मन नहीं आया इसलिए क्लास बहुत शांत है, बहुत बदमाश बच्चा है। करते हैं ना वैसे गॉसिप? नहीं करो। स्पीक पॉजिटिव, देन ओनली रिलेशनशिप्स विल बी पॉजिटिव। Speak good about others. Develop self-confidence. Let the child feel secure and comfortable in your presence. That's very, very important. Next. Sorry. Developing coping skills. Have you ever noticed, my dear teachers, that when you change the seats of students, where you will come and sit there, you will sit with him, you will sit with her, many children cannot digest it. So many start crying. When the section is going to change now, this is the end of the session, sections will change, they start crying. They come with, applications from parents. Why? Because coping skills have become zero. We are not able to cope with any kind of difference, with any kind of, changed mindset. We only think, हम जैसे हैं सबको वैसे ही रहना है। हमारे जीवन में जरा सा भी आंधी तूफान में नहीं कहूंगी, जरा सा हवा का झोंका भी तेज आ जाए, हम कोप अप नहीं कर पाते। इसको रेजिलियंस भी कहते हैं। वी आर नॉट रेजिलियंट, हम वापस ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए तो हमारे आज के बच्चे सुसाइड कमिट कर देते हैं, हमारे आज के बच्चे चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तुरंत सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोपिंग स्किल्स है ही नहीं, हम कोप ही नहीं कर पाते। आई है कोई परेशानी, चली जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर सूरज डूब रहा है तो वो उगेगा भी। When the good days did not stay, how can the bad days? हमारे घरों में आजकल एक बच्चे होते हैं। आपकी कक्षा में भी जो बच्चे आते हैं, generally 1 or 2 kids, they're getting everything from parents. Whatever they want, they have got from parents. This is another reason they're not able to cope up with hardships, with problems, with stress, with the changing challenges of life. They're not able to face it. So you have to teach them to become tough. थोड़ा थोड़ा कितना गैस का रेगुलेटर ऑन ऑफ करना वो आपको समझना है। आप एक ही बार में एकदम हाई फ्लेम कर देंगे तो दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा सिम, फिर 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन आपको बच्चे को झेलना, कोप अप करना। ये जो बच्चों की सीट चेंज करते हैं, सेक्शन चेंज करते हैं, व्हाई डू वी डू दैट? सो दैट आवर चिल्ड्रन कोप अप विद डिफरेंट पीपल अराउंड देम। दे फेस चैलेंजेस। अब से नए बच्चे बनेंगे, नए फ्रेंड्स होंगे, नया टीचर होगा, तो वो चैलेंजेस को फेस करना सीखेंगे। सो दे विल लर्न हाउ टू कोप। So this is also very, very important in order to be happy. Happy रहने के लिए मेरे जीवन में जरा सा तनाव आ गया, मैं अनहैप्पी हूँ। किसने कुछ बोल दिया, मैं अनहैप्पी हो गई, मैं मर गई, मैंने सुसाइड कर लिया। ये हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता। हैप्पीनेस का मतलब है सब कुछ फेस कर सकते हो। Acknowledge individual differences. As a teacher, please don't expect that when you're giving a lecture in the class, when you're trying to go through a topic in the class, everybody will understand in the same way. Everybody will get same marks. Everybody will be able to answer your question. Please, a big no. Children are different. There are individual differences. Differences in their capacity. Differences in the capacity to comprehend. Differences in the capacity to understand. Differences in the capacity to assimilate. So maybe you have to keep on making consistent efforts so that everybody goes home with some learning and is happy at the end of the day. And very, very important is practice kindness. A teacher who is not kind is not a teacher. A human who is not kind is not a human. We have to be kind. Child must know कि कितना भी बड़ा गुनाह करे, मेरे टीचर पनिश जरूर करेगा, लेकिन काइंडनेस के साथ। इतना पनिश नहीं कर देगा कि मारते 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 बच्चे की जान ही ले ले। ये संभव नहीं।
उसे पता होना चाहिए कि मेरा टीचर मुझे उतना ही पनिश करेगा जितने से मैं सीखूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं वेल मैनर्ड हो जाऊं, मैं अच्छा बच्चा हो जाऊं। उतना नहीं पनिश करेगा कि मैं खत्म ही हो जाऊं। प्रैक्टिस काइंडनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टीचर्स दैट वी बी काइंड। वैसे भी इस पूरी दुनिया में शायद काइंडनेस की बहुत कमी हो गई है। उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने आने वाले जनरेशन में डाल सकते हैं, सो दैट दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस फॉर यू एज वेल एज। Next is rewire the negative bias. Very, very good thing. कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको भी मिले होंगे अपने जीवन में, जो हमेशा गलतियां निकालते हैं, जैसे प्रिंसिपल। उनका काम ही होता है, मैं अपने टीचर्स को बहुत समय कहती हूँ, व्हाट आई टेल देम, बेटा आपको नौकरी मतलब पैसे मिलते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। पता है मुझे किस लिए पैसे मिलते हैं? आपकी गलतियां निकालने, सिस्टम में गलतियां निकालने, बच्चों में गलतियां निकालने के पैसे मुझे मिलते हैं। So don't think actually that way. Even if the principal is telling you something again and again and again, just because he or she wants to improve you and the system in the school on the larger scale. But you as a teacher, you have to understand कितना भी बदमाश बच्चा हो, कितनी भी गलतियां वो क्यों ना करे, कितना भी खुराफाती हो, नॉटी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ अच्छाई है। उस अच्छाई को खोज कर निकालिए आप, तभी आप एक सक्सेसफुल टीचर। Try to bring out the good in everybody. लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है, वो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही करते हैं। एक छोटा सा आपको टिप बता दी, हाउ टू बिकम अ पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन। टिप है, राइट 3 गुड थिंग्स every day in a sheet of paper. 3 good things that happened to me today. 3 good things that I saw today. 3 good things that I ate today. 3 good things that I did today. बहुत सारी वाइफ का कंप्लेन होता है, मेरे हस्बैंड कभी तारीफ ही नहीं करते मेरे खाना बनाने का। होता है, एक्चुअली होता है। दूसरा आदमी खाएगा, उसकी बहुत तारीफ करेगा, हस्बैंड खाएगा, तारीफ नहीं करेगा। कितना भी आप तैयार हो लो, हस्बैंड नहीं कहेंगे आप अच्छे लग रहे हो। It happens with some people. Don't think positively. It actually happens. So if you practice every day 3 good things I will write, 3 good things I will write, धीरे 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 वो आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आप नेगेटिव के जगह पॉजिटिव को देखेंगे। Okay, so rewire your negative minds. Be optimistic. ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। You have to be optimistic. You have to think that yeah, tomorrow is going to be a wonderful day, great day, a lovely day. कल तो मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगा जो मैंने अभी तक नहीं किया। Be optimistic. Life gives you another chance every day. In 24 hours, things are coming back to you.